morning students. Today we will learn a new chapter, capacity. In our previous classes children, we have learned about weight and I hope all you have understood weight very nicely. But still let us revise it once more. So first, what is weight? Weight is the heaviness of any object and we can measure weight of any object by using three different units like milligram, gram and kilogram, where milligram is the smallest unit of measuring weight and kilogram is the biggest unit. So now children, let us understand what capacity is. Start. Capacity is the amount of liquid a container can hold or a container can contain is called its capacity. That means कोई भी बर्तन या कोई भी कंटेनर जितना लिक्विड कंटेन कर सकता है, जितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, that amount of liquid will be its capacity. Okay? So capacity is the amount of liquid a container can hold. And we can measure the capacity of any container either in liter or milliliter. There are two different units that we use for measuring capacity, liter and milliliter. Liter can be written or can be represented as this L, whereas milliliter can be written as in short form as ml, milliliter. Now children, look at here, liter is the bigger unit and milliliter is the smaller unit. Okay, and there is a relationship between milliliter and liter. 1 liter is equal to 1000 milliliter. That means when we combined 1000 milliliter or 1000 milliliter, then it will be equal to 1 liter. We will find out capacity of these different containers, okay, by using this small cup. So look at here, the capacity of this cup is 200 ml. You can see it's 200 ml only. Okay, milliliter, 200 milliliter. By using this cup, we will find out the capacity of these different containers. Let us see how. Yeah, first we will pour water in this. Now it is full of water. So this is only 200. So I will pour this water into this bottle. ml I have poured. Now this is next 200 ml. Okay. So 200 plus 200, 400 ml water we have poured into the bottle. Again 200 ml. So 200, 200, 3 times. This is the third times. So 600 water we have poured. Now this one. Again 200. ये चौथी बार हम डाल रहे हैं बच्चों. 4 times. This is the fourth time. We are pouring water into this bottle. 4 times. Yani 800. 800 ml liquid we have poured. Now 5th time. This is the 5th time. Okay, we can see the bottle is now completely filled with the water. So we can conclude, we come to know that 200
200 ml की अगर हम 5 कप पानी लेंगे तो ये 1 लीटर का बॉटल पूरा फुल हो जाएगा। That means 200, 200, 200 5 times will make 1000 ml या फिर 1 लीटर। So we came to know that here 1000 ml is equal to 1 लीटर और हमें ये भी पता चला कि 5 200 ml 5 200 ml 5 into 200 ml will make 1 liter. Now children, let's pour this water, this 1 liter water into this mug. This 1 liter mug. What we see? Look at this. This mug is also completely filled. Oh my God! That means the capacity of this mug is also equal to 1 liter. यानी इस मग का भी कैपेसिटी कितना हो गया? 1 लीटर। तो अब हमें पता चल गया है कि ये 1 लीटर है इसकी कैपेसिटी, इसकी भी कैपेसिटी 1 लीटर। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ दिस जग। ओके, बाय यूजिंग दिस मग। अभी हमने क्या पता चला कि इस मग की कैपेसिटी 1 लीटर है। Let us pour the water into the jug with this mug. So 1 liter water we have poured and half jug, I think half of the jug has filled. Now next 1 liter. Look at this. So this completely filled. Okay. इसके 2 मग से हमने इस जग को फिल कर दिया, तो इस जग की कैपेसिटी कितनी हो गई है ना? हमने 1 लीटर 2 बार इसमें पानी डाला एंड वी फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ दिस जग इज इक्वल टू 2 लीटर। नाइस ना? इट्स वेरी इजी चिल्ड्रन। नाउ लेट अस फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल। ये स्प्राइट की बॉटल है जो आप सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी आपने कभी ध्यान नहीं दी होगी। सो इस जग में हमने कितना पानी भरा है? 2 लीटर पानी है। अब देखते हैं लेट अस फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ दिस। लेट्स ट्राई टू pour it directly. Okay. Yeah, slowly. Oh, water is pouring outside. Water is starting overflowing. Okay, the water is starting overflowing out of this bottle. That means the capacity of this bottle definitely less than the capacity of this jug. क्योंकि इसमें 2 लीटर पानी था और वो 2 लीटर पानी इसमें नहीं जा सका, यानी इस बॉटल की कैपेसिटी कम हो गई है ना? So water is flowing outside, overflowing. The water is overflowing out of the bottle. That means we conclude that the capacity of the bottle is less than the capacity of this jug. यानी capacity of the jug is more, bottle का capacity कम है। So now look at these small bottles. आप सब इस बॉटल से भली भांति परिचित है। All of you are very much familiar with these bottle है ना? So आपने कभी कैपेसिटी देखा? हर एक बॉटल पे उसकी कैपेसिटी लिखी रहती है। जैसे इस पे भी कैपेसिटी लिखी हुई है 100 ml। ये जो रेंटे की सिरप की बॉटल है इसकी कैपेसिटी है 100 ml मिलीलीटर, और ये जो इससे थोड़ी सी छोटी है ना, तो डेफिनेटली इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इससे कम होगी। तो कैपेसिटी ऑफ दिस स्मॉल सिरप इज ओनली 60 ml। ये 60 ml है, ये 100 ml है ना? तो अब आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि 2 ml ये पूरा जग है और ये मात्र 60 ml है।
60 ml. तो आपको पता चल रहा है कि ml is very much a smaller quantity than a liter, very much smaller unit, sorry, not quantity. ml is a smaller unit than a liter. And look at this, ये एक बड़ी बॉटल है, बड़ा गैलन है, इसे गैलन बोलते हैं, सफोला गोल्ड। आप यहाँ देख सकते हो कि इस पे भी कैपेसिटी लिखा हुआ है, इट इज 5 लीटर। कैन यू सी इट इज, दैट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ दिस गैलन इज 5 लीटर, यानी 5 लीटर ऑयल ये गैलन कंटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। बाय दीज एक्सपेरिमेंट we come to know that different container, like here we can see different container have different capacity, and the capacity of any container depend on its size and shape. So that's all children, I hope all you have understood capacity very nicely.